हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एआरएस एंड नेट इन द डोमेन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज का हमारा स्पेसिफिकली सेशन है व्हाट इज द बेस्ट वे बाय विच वी आर एबल टू acquaint with the generalized questions from the preparation of food technology. We already launched a batch with consider the mock test, some of the doubt solving session, and most importantly we have the explanation accordingly. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन Export Inspection Council established in which year? We could say it is the EIC, Export Inspection Council. Keep into account, Export Inspection Council actually established as per Export Act for Quality and Assurance. So जो Export Act था हमारा specifically in their 1963, according to that, according to Export Act 1963, establishment of Export Inspection Council. Now we have the council. Council का अच्छे तरीके से काम करने के लिए we have the EIA, that is Export Inspection Agency. Currently there are 5 divisions of EIA, like 4 metros, and along with that 5th one is the Kochi. ये 5 center है for the EIA, Export Inspection Agency के तहत. And yes, EIC started in 1963. Okay, let's move on. Which scheme has the main objective? Because we have certain types of mottos. हर एक स्कीम का क्या है ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके परामर्श है, उस हिसाब से टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चर चैंपियंस। इट मींस हमें हमारे खुद के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए प्रमोट इंडियन ब्रांड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट एट द ग्लोबल वर्ल्ड। उसके तहत इनमें से कौन सी एजेंसी आती है? दीज आर द 4 वन। आपको एक एक बताता हूं। PLI, SFPI, specifically production linked incentive scheme for food processing industry. PMKSY, it is प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखिएगा, संपदा भी है और यस फॉर सिंचाई भी है। PMKSY सिंचाई इज द अनदर स्कीम, and this is the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana. It is for we could say Samman of the Kisan. According to that, जो 6,000 rupees मिले थे to the eligible farmers in the 3 installment, वो अलग सी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, सॉरी किसान सिंचाई नहीं, किसान संपदा योजना। यह है किसान संपदा योजना। ठीक है, देन PMFME, फॉर्मलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक फूड इंडस्ट्री, NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड। पहले हमें सबका मीनिंग पता होना चाहिए। नाउ व्हेन द क्वेश्चन इज दैट वी हैव द स्पेसिफिक आंसर फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जिसके तहत वी आर प्रोवाइडिंग आवर डोमेस्टिक ब्रांड अ हेल्पफुल हैंड so that they could be achieve a champion status at the global level. ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिकली संपदा योजना, जिस वजह से हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले। ठीक है, PMFME स्पेसिफिकली फ्रॉम वोकल फॉर लोकल। ओके, वोकल फॉर लोकल, फॉर देम वी हैव द PMFME स्कीम। ओके, जिसके तहत ODOP भी स्कीम था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी स्कीम इसी के तहत था। ठीक है, उस हिसाब से लेट्स मूव ऑन। Now, this is the current stats. Every time at least one question could be from current stats point of view. So the per capita availability of milk in the year 2023-24. हो सकता है आपने कुछ डिटेलिंग पढ़ ली हो, but it will be of previous year. So ध्यान में रखिएगा 459 is there, but ये कब का है? 2022-2023. And for 2023-4, the answer is 471. Yes, the answer is 471 here. That's why 471 is the specific answer accordingly. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, now high intensity ultrasound frequency which is requirement specifically among the all, तो ये ध्यान में रखिएगा because it is a specific range and ये कहाँ का है? 2200 kilohertz. Okay, right, चलिए। Now at last,
Which parameter in the PEF is the pulse electric field, okay, it's typically measured in kV per centimeter, किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में. इसमें से चारों में से कौन से पैरामीटर में हम यूज कर सकते हैं एज द यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो पल्स ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पल्सेस इन n, ट्रीटमेंट टाइम t, the n, electric field strength, okay, that is there, and pulse duration specifically in time, micro or millisecond, likewise these are there. So answer is nothing but the electric field strength. Done. Okay, चलिए, तो these are some of the simple questions we're trying to move about that. Now apart from that we already announced a batch that is there. तो इसमें आपको exactly we have the 8 units, तो हर एक यूनिट पे 5, so you got 40 number of mock test. Apart from that 5 full length mock test, 1 free, so cumulatively 45 to 46 mock test you have. Already we have prepared a sessions according to that, so these 8, apart from that 5 full length mock we are trying to provide you, तो आप ये भी ले सकते हो. इसी के साथ some of the examples from the repetitive questions, the nature of the repetitive questions like current stats, milk stats, current stats, specifically the best reference material is the NHB, National Horticulture Board. Anti-nutritional factor, exactly किसमें क्या है, Gossipol, likewise it could be in the cotton, and what could be the removing methods. Food safety regulations, years, कौन सा regulation, कौन सा year, like food safety auditing 2018. Key scientist, name of the scientist, thermal and non-thermal techniques, specific requirement according to the same, and उसमें भी specific parameters, time temperature combination, likewise pasteurization, like it could be cold, we could say the difference between pasteurization, sterilization, canning, the scientist name, HACCP, along with that the different set of 7 principles, 12 steps, different types of packaging test, and nutritional labeling, veg logo, non-veg logo, even fortified logo plus followed by capital F, that is the fortified. Sampurna Poshan Swasth Jeevan is the specific theme for the fortified food. So definitely we need to know about the same. Some of the basic tips: avoid rule, do not try to avoid too much questions, limit yourself, focus on high yield topics, specifically unit 1, that is the high yield topics. Repetitive questions are too much, specifically from FSSR point of view, years. So these are the symptomatic questions. Make the schedule according to study plan because we have very limited time duration. And finally, proper reading source could be there. Fine. Yes, I already said that this is some of the set of tactics which we are use, जिस वजह से आपको real life real time pressure feel होगा. The batch which is available and the specific price is 999. Some of the key reference material according to the same. Okay, so yes, if still you have any query, these are our details, so बने रहिए इसी के तरफ. So definitely the session is useful to you. Thank you.